ओमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna devotees, thank you very much for taking out your valuable time and coming. So till now we are in the Nectar of Instruction series, seen 7 verses, and those 7 verses describe about the sadhana bhakti of a sadhaka, and specifically we have seen that how that sadhana bhakti reaches up to the stage of nishtha, you know. And now from 8th verse, or rather just the 8th verse which we are going to see today, it is going to describe raganuga bhakti. So this is also a kind of sadhana bhakti only. So uh, please be a little attentive and careful, because uh, it's a little bit we need to understand, and we can just understand theoretically, because Raganuga Bhaktas, one has to experience for that. And therefore less information, or uh, we can just get the information from the scriptures about that. We cannot just experience it immediately. Till sadhana bhakti we have experience, because we are all practicing. So now after this, whatever we will do is what I have read and what Prabhupada is giving, that only we will discuss. Okay. So last verse, which we saw, verse number 7, the Rup Goswami has told us that please kindly chant the holy name of the Lord. You know, by chanting the holy name of the Lord, what will happen? So he said the disease of jaundice will be cured. But then how we should chant the holy name? He said we should chant with respect, you know, and carefully, and every day we should do. And then what will happen? We will again get the taste. Again get the taste back. And what is that taste has gone due to avidya, that avidya will be gone and will get the taste back. So till this, there is a very sadhana bhakti. So now Rup Goswami is taking us and entering us into a Raganuga sadhana bhakti. So what it is, first let us try to understand this before we go to the shloka. See, Rup Goswami in Nectar of Devotion has given, there are 3 bhaktis. One is sadhana bhakti, another one is bhav bhakti, and then comes the prema bhakti. And sadhana bhakti is of 2 types. One is Vaidhi sadhana bhakti, another one is Raganuga sadhana bhakti. So, if somebody performs Vaidhi sadhana bhakti, what is a Vaidhi sadhana bhakti? Vaidhi sadhana bhakti is a bhakti which one performs based on the instructions or scripture injunctions. He is performing that bhakti because this is mentioned in the scriptures, and I have full faith in the scriptures, and therefore I will perform this. This is called Vaidhi sadhana bhakti, where the impetus to perform the elements of bhakti are scriptures. Okay. Now, can somebody attain prema by Vaidhi sadhana bhakti? Yes, very well. If somebody performs Vaidhi sadhana bhakti, Rup Goswami says he will also attain love of Godhead. And that love of Godhead, when we will attain, what will be his attainment? His attainment will be of that of Vaikuntha planets, and liberation and other things. So he will get prema, but that will be Aishwarya Janit prema, and he will reach to that point only. But now, because we are Gaudiya Vaishnavas and Chaitanya Mahaprabhu has come to give Anarpita Charim Charat Karune Avatirna Kalo Samurpayetum Unnat Ujjalar Sam Swabhakti Shriyam. So when he has come to give us something which has not offered from long time, that something is the love of Krishna, which
is subservient or which is kind of falling on the footsteps of the Vrajvasis. Hmm. So now, when we want to attain that love, falling on the footsteps of Vrajvasis, that love for Krishna, or in our terms, when we say when we want to go that Golok Vrindavan, specific place, not just Vaikuntha planets, Golok Vrindavan. Then Rup Goswami says, and in Chaitanya Charitamrita also, Krishnadas Kaviraj Goswami mentioned this, that by doing Vedi sadhana bhakti, we cannot attain that. Hmm. By Vedi sadhana, we cannot enter into that Golok Vrindavan, and in that mood of that Brajvasis. For that, our sadhana bhakti has to be turned from Vedi sadhana bhakti to Raganuga sadhana bhakti. Hmm. Now, Raganuga sadhana bhakti is also sadhana bhakti only. Hmm. It's not something weird thing which people do. No, no, no. But only thing is, impetus in Raganuga sadhana bhakti is not the scriptural injunctions. That impetus in the Raganuga sadhana bhakti is simply the longing and greed to love Krishna. That is the impetus. Now we may think कि प्रभु जी ये longing greed कभी आ सकता है क्या? Yes, आ सकता है ना? When we'll practice, है ना? And Raganuga sadhana bhakti, then it can come. Now, how to practice Raganuga sadhana bhakti? What all things to be taken care, you know, and how I can perfect myself in Raganuga sadhana bhakti so that I can reach to Bhav bhakti and then to Prema, you know, and especially to aim for that Golok Vrindavan. That is what is given by Srila Rupa Goswami here in this text number 8. So this text number 8, it's our blessings in Gaudiya Vaishnavas that they have told us, our acharyas, how to practice Raganuga Bhakti. And people may say sometime have these allegations that Prabhupada has not given us everything. But today we will see in Prabhupada's purport, everything is given. Prabhupada has given everything. How to follow Raganuga Sadhana Bhakti, it is mentioned here. So let us try to see it. Rupa Goswami says, तन्नामरूपचरिताति सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागजनानुगामी कालं नयेत् अखिल इति उपदेशसारम्. So, word to word meaning. It says Tat of Lord Krishna, Nama, the holy name, Rupa, form, Charidadi, character, pastimes, and so on. Sukirtanam, in discussing or chanting nicely. Anusmrityo, and in remembering. Kramena, gradually. Rasana, the tongue. Manasi, and one's mind. Niyojya, engaging. Tishtan, residing. Raje, in Raja. Tat, to Lord Krishna. Anuragi, attached. Jana, persons. Anugami, following. Kalam, time. Nayet, should utilize. Akhilam, full. Iti, thus. Upadesh, of advice or instruction. Saram, the essence. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in Vraja, Golok Vrindavan Dham, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. So, dear devotees, what Rupa Goswami says, that this was the essence of all the advice. Why? Because Rupa Goswami is urging us that we all are followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And of course, Prabhupada says we are Rupa Nugas. So Rupa Goswami says, I'll give you one advice. If you really want to follow Chaitanya Mahaprabhu, follow this shloka. Because enter into Raganuga Bhakti so that you can achieve that goal of Vrindavan. But don't enter prematurely and, of course, not fanatically. But how to enter, the process is given here. And what does entering into means? It says 24 hours a day in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, and eternal pastime. Therefore, thereby gradually engaging one's tongue and mind. So this is what is a stage of a Raganuga Bhakti. It's 24 hours absorbed
in chanting and remembering Lord's name, form, qualities, and pastimes. Hmm. Chanting by his tongue, remembering by his mind. That's why it is said engaging one's tongue and mind, both the things. Hmm. And not only that, another thing is he resides in Vraja, Golok Dham. So now if all the devotees come to Vrindavan, then what Vrindavan will become? Hmm. So of course we will see what does it mean residing in Vraja. And very important thing which we discussed last time also, serve under the guidance of devotees, following in the footsteps of Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. They are Vrajvasis. Tad anurag jananugami, those who have developed that anuraga for Krishna. Hmm? We were discussing from previous shloka that Uttam Adhikari, that guru whom we are taking initiation from, that guru is supposed to guide us. We are supposed to follow his footsteps. We are supposed to follow his instructions, and to actually achieve that. And of course, in this case, those who have anurag for Krishna, they are of two types. One are the Vrajvasis, eternally liberated souls, Nitya Siddhas, those who are there in Vraja. We can follow on their footsteps also. And of course, our Guru, currently, those who have become perfected, we can follow their footsteps. So either of their footsteps we can follow. Residing in Vraja, constantly remembering and chanting the name, form, qualities, and pastimes of Lord Krishna. That is the sum and substance of all the instructions what Rup Goswami is given. ठीक है. So now all of you may think, प्रभु जी क्या बता दिया आपने, तो हो, है ना. Don't worry, let us enter into Prabhupada purport and try to see systematically what it is, है ना. Yes, one of you can read, Prabhu. Since the mind may be one's enemy or one's friend, one has to train the mind to become his friend. The Krishna conscious moment is especially meant for training the mind to be always engaged in Krishna's business. The mind contains hundreds and thousands of impressions, not only of this life, but also of many, many previous lives, many, many lives of past. These impressions sometimes come in contact with one another and produce contradictory pictures. In this way, the mind's function can become dangerous for a conditioned soul. Students of psychology are aware of the mind's various psychological changes. In Bhagavad Gita 8.6, it is said, Yamya vapti smaranam bhamam jante kalevaram tattam eva tamtam evati hi kaunteya sada tadbhava bhavita. Whatever state of being one remembers, when he quits the body, that state he will attain without fail. At the time of Hmm. death, at the time of death, the mind and intelligence of a living entity create the subtle form of a certain type of body for the next life. If the mind suddenly thinks of something not very congenial, one has to take corresponding birth in the next life. On the other hand, if one can think of Krishna at the time of death, he can be transferred to the spiritual world, Goloka Vrindavan. This process of transmigration is very subtle. Therefore, Srila Goswami advises the devotees to train their minds in order that they will be unable to remember anything other than Krishna. Similarly, the tongue should be trained to speak only of Krishna and to taste only Krishna Prasad. Srila Rupa Goswami further advises Tisthana Virji, one should live in Vrindavan or any part of Brajbhumi. Brajbhumi or the land of Vrindavan is supposed to be at 84 koshas in area. One koshas equals to 2 square miles. When one makes Vrindavan his residence, he should take shelter of an advanced devotee there. In this way, one should always think of Krishna and his pastimes. This further educated by Srila. This is further elucidated, elucidated by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu 1 to 294. Correct. So we'll read that. Lekin what is explained here is, that Rup Goswami Prabhupada is telling that our mind can be trained. Our mind can be trained. Now, how mind is trained? So there is a process to train. So now we all know this yam yam vapi smaran phavam. But it will not become automatic. The mind will not remember Krishna automatically. It needs training. You know. And that training, when mind is spontaneously, automatically, thinking of Krishna, that is a stage
of Raganuga sadhana bhakti, at least minimum. So, as a devotee, as a sadhakas, we all know that when we are practicing sadhana bhakti, we are practicing it is because of the impetus of the scriptures, you know. And it is said morning chanting, okay, we get up and chant. But what about throughout the day? That time, a Vedi sadhana bhakta may not be remember Krishna. We do services, but a Vedi sadhana bhakta may not remember Krishna while doing services. So therefore, it requires training. Hmm. And that training is a very important part. Training of a mind and training of a tongue, both. And slowly, slowly, when our mind gets trained, then we will attain this stage. And Prabhupada is telling we can constantly remember Krishna and stay in Vraja and follow the footsteps of Vrajavasis. So that means that it is not automatic process. Why I am telling you this is because many a times devotees they are oblivious to this process. Oblivious समझते क्या होता है? ऑब्लिवियस मतलब बोलते हैं हो जाएगा प्रभु अपने अपने आप नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रभुपाद क्या बोले? ट्रेंड करना पड़ेगा माइंड को, करेक्ट? इट विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, है ना? अ ट्रांजिशन फ्रॉम वेदी साधना भक्ति टू रागनों का साधना भक्ति विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। आप अगर कोई डिवोटी ऐसा, तो ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर कोई कोटि कोटि जन्मों तक वैदिक साधना भक्ति करेगा तब भी वो मेरे गोलोक वृंदावन नहीं आ पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? रागनों का साधना भक्ति करना पड़ेगा और उसके लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को, है ना? एंड व्हाट इज द ट्रेनिंग पार्ट, है ना? दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। वेरी ब्यूटीफुल ट्रेनिंग पार्ट, हाउ टू ट्रेन दैट माइंड, व्हाट ऑल थिंग्स कम्स इन ट्रेनिंग, है ना? ऑफ कोर्स ये श्लोका था प्रभुपाद जो बता रहे थे, कृष्णं स्मरणं जनम चास्य प्रेष्ठाम निज समेहिताम तत्तत् कथा रतश्चासौ कुर्याद् वासं व्रजे सदा. A devotee should always reside in the transcendental realm of Raja and always engage in the Krishna Smaran Jana Chasya Prishtham, the remembrance of Sri Krishna and his beloved associate. By following in the footsteps of such associates and by entering under their eternal guidance, one can acquire an intense desire to serve the Supreme Personality of Godhead. So that desire is attained. We have to practice right from beginning of nectar of instruction. We are saying bhakti is a cultivation. Cultivation means we have to practice. We cannot just say that Prabhuji ठीक है मैं कर रहा हूँ ना सोना माला, मैं श्रवण भी कर रहा हूँ, मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, हो गया, अब कृष्ण देखेंगे? नहीं नहीं, कृष्ण नहीं देखेंगे, है ना? हमको भी कुछ करना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? कैसे कैसे वो रागनों का भक्ति में एंटर कर सकते हैं? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अपने आप नहीं करना है, ऑफ कोर्स गाइडेंस में करना है, लेकिन क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हम आगे देखते हैं। यहाँ से जो परपोर्ट है शिला प्रभुपाद जी ने पूरा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कॉपी किया है ना? सो लेट अस ट्राई टू सी दैट। आई विल रीड इट फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट आल्सो साइमल्टेनियसली, है ना? अगेन श्री रूप गोस्वामी स्टेट्स इन भक्ति रसामृत सिंधु, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुन कार्य व्रज लोकानुसारता. In the transcendental realm of Vraja, Vrajadham, one should serve the Supreme Lord Shri Krishna with a feeling similar to that of his associates, and one should place himself under the direct guidance of a particular associate of Krishna and should follow in his footsteps. This method is applicable both in the stage of sadhana, spiritual practice executed while in the stage of bondage, and in the stage of sadhya, God realization, when one is Siddha Purusha or a spiritually perfected soul. So what happens is there are these devotees, है ना, who are perfected beings, those who are Krishna Nija Janas, है ना, they are there with Krishna. So now, when we want to love Krishna, very important thing you have to understand, ना, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? देखिए, when we want to develop the feeling similar to that his associates, है ना, हमको वही फीलिंग चाहिए, वही लव चाहिए, वही अट्रैक्शन जो व्रजवासी का है, तो कैसे आएगा? तो यहाँ पे बता रहे हैं, वन शुड place himself under the direct guidance of a particular associates of Krishna and follow his footsteps. Okay, so now we see there are gopis, there are Nand Baba, Yashoda Mai, and Gopas, and other. All the people are in various rasas. They are present in Golok Vrindavan. So now we want to associate with them. How we will get their association? For that we have to go to Golok Vrindavan. You know? Then only we will be able to closely associate with them and understand. So therefore, it is said that those devotees
है ना. Those who are directly associating with Krishna, Krishna Nija Janas, they are having love for Krishna, है ना. They are called Rag Atmika Bhaktas. राग आत्मिका. राग आत्मिका मीन्स देर आत्मा में राग है, मतलब उनका फुल्ली लाइफ ही कृष्ण हो चुका है और कुछ है ही नहीं. दे आर कॉल्ड राग आत्मिका भक्तास. ठीक है. सो नाउ वी वांट टू एसोसिएट विद देम. सो हाउ वी गेट देयर एसोसिएशन, है ना. सो अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग है ना, इस व्रज में, इस यूनिवर्स में. तो क्या होता है, when we really want to enter into Golok, so first we are trained here in this material universe. How? So wherever Krishna has come along with his associates, कहीं ना कहीं कृष्ण वो पास टाइम कर रहे हैं. So उस पास टाइम प्लेस में हमको भी एक जगह मिल जाती है. We also get an entrance into that pastime place in the next life, है ना, when where we are trained under them. So now when we want to be trained under them, है ना, and we are aspiring for that training, हम application form fill कर रहे हैं, है ना, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ना उसको बोल सकते हैं आप, प्रिपरेशन कर रहे हैं. वो प्रिपरेशन को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राग अनुका भक्तिस. राग मतलब वो जो डिवोटीज है जिनके अंदर राग है, अनुगा हम उनके सब सर्वेंट बन के वी आर प्रैक्टिसिंग. दैट इज कॉल्ड राग अनुगा भक्तिस. एंड देयरफॉर before we place ourselves into direct guidance of those devotees, we have to first follow in their footsteps. And that following, Prabhupada is mentioning, and Rup Goswami also says, is a method applicable in the both senses, sadhana and sadhya, God realization. What does it mean? है ना. Of course, we are just theoretically understanding. Don't go practically how it happened, because it will happen when it will happen with devotees, है ना. How Krishna will does, that is his part. But our acharyas have given us some guidelines. We can just try to understand them. So when we are in the sadhana stage, when we are in the bondage stage, this raganuga bhakti can be practiced by aspiring to be those ragatmika bhakta, like, you know, that how they have love for Krishna, how they are serving Krishna and constantly remembering Krishna like they are doing, so this, when it is done in the sadhana part, it is called raganuga sadhana bhakti. And in the perfected stage also same thing happened. Perfected stage, what, which I told you, when we take part in the pastimes of Krishna, which is happening somewhere in the universe, and there also we are trained again under them, how it happens and how we can love Krishna, because ultimate training will be given by them only. And in that realm when Krishna is doing pastimes, है ना, what we are doing is we are aspiring admission के लिए अभी हम preparation करेंगे, है ना. वो preparation साधना टाइप में करेंगे. एंड देन वहां पे जब गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा, वी आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम अनर्थास, देन वी विल बी पोस्टेड देयर. अगेन दिस इज द मेथड फॉर गोइंग गोलोक वृंदावन, नॉट एनी अदर प्लेस. ठीक है. नाउ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर also gives a very wonderful systematic things. Let us try to see that. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has commented as follows upon this verse. Please hear carefully. One who has not yet developed interest in Krishna consciousness should give up all material motives and train his mind by following the progressive regulative principles, namely chanting and remembering Krishna and his name, form, qualities, pastime, and so forth. In this way, after developing a taste for such things, one should try to live in Vrindavan and pass his time constantly remembering Krishna's name, fame, pastime, and qualities under the direction and protection of an expert devotee. This is the sum and substance of all instructions regarding the cultivation of devotional service. So, what happens is, देखिए, अभी हम साधना भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं. कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं? रागानुगा साधना भक्ति की बात कर रहे हैं. वैदिक साधना भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, रागानुगा साधना भक्ति की बात कर रहे हैं. और वो रागानुगा साधना भक्ति क्यों चाहिए? अगर गोलोक वृंदावन में जाना है कृष्ण के एसोसिएट बन के, है ना. सो नाउ we have to see here very important thing. Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Sandra Thakur is talking about Raganuga Sadhana Bhakti. He says one who has not developed interest in Krishna Katha, मतलब अभी टेस्ट नहीं आया उसको कृष्ण कथा में, he should give up all material motives and train his mind in following the progressive regulative principles, namely chanting and remembering. मतलब हमको material desires को give up करके we have to train our mind
to give up material desire and cultivate, बहुत important है ना, cultivate what? Following regulative principles like chanting and remembering Krishna's name from constant. तो chanting तो हम कर रहे हैं, रिमेम्बरिंग कर रहे हैं क्या? वो कैसे आएगा? वो अगले अगले पैराग्राफ में बताया गया। और जब वो हमारे अंदर वो एक टेस्ट आ गया, हमारे माइंड को वो इंटरेस्ट आ गया श्रवण करने का और स्मरण करने का, देन वी शुड लिव इन वृंदावन। लिविंग इन वृंदावन मीन्स व्हाट? लिविंग इन वृंदावन मीन्स इन आवर माइंड और फिजिकली वन शुड बी इन वृंदावन। माइंड के वृंदावन को बोलते हैं भाव वृंदावन। Bhav Vrindavan means we are alwaysly constantly associating ourselves with the pastimes of Raja, and we are seeing what all things are there. You know? So that kind of stage one should reach. And we know many times when Prabhupada was there, you know, he was also constantly in Vrindavan, living in Vrindavan. So this kind of state one should be at least in. You know? Like here in, I'm speaking from Jhansi. So in Jhansi also we know that once Prabhupada was sitting in his room, and he got a very good garland which was offered to him by Krishna, you know, and that garland was very fragrant, having a Vajanti mala, more than 5 types of flowers, you know. And Acharya Prabhakar, Prabhupada's first disciple, he came and he saw what happened. Prabhupada, how you got this garland? Prabhupada said, Krishna gave me. You know? So he, of course, Prabhupada is very elevated, but I'm telling you how he is constantly in Vrindavan. In his meditation, Bhav Vrindavan, he is always associating everything with Vrindavan. So this kind of absorption is needed for one who wants to actually perfect his Raganuga Sadhana Bhakti. Okay. And stay in Vrindavan means in the mind at least, physically जा सकता तो बहुत अच्छा है, and follow the footsteps of great souls. Whose footsteps to follow? So the particular rasa which he wants to develop, he should follow their footsteps. So now how we can attain this Raganuga Sadhana Bhakti? Bhakti Sandra Thakur tells the process. Hear this process very carefully. One thing he told already previously, broadly, he should give up material motives and cultivate Shravanam and Smaranam. How it happens? Here it is mentioned. In the neophyte stage, one should always engage in hearing Krishna Katha. This is called Shravan Dasa. So बहुत इंपॉर्टेंट है रागानुगा साधना भक्ति में जाने के लिए, वैरी साधना भक्ति से, वो है श्रवण करना। बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवण करना। ऐसा in the neophyte state, one should always engage in hearing Krishna Katha. This is called Shravan Dasha, the stage of hearing. By constantly hearing the transcendental holy name of Krishna and hearing of his transcendental form, qualities, and pastimes, one can attain to the stage of acceptance called Varandasha. What is the stage of acceptance? You know, वो बता रहा है stage of acceptance means what? You know, when he becomes completely attached to hearing Krishna Katha. This is called stage of acceptance. मतलब now, wherever he goes, he wants to know about Krishna. He wants to hear about Krishna, nothing else. You know? He's not there into prajalpa business. He's not there into any material sense gratificatory business. He is not into, ninda of any devotee. He is just focusing on Krishna Katha. So now there are many examples of such devotees in our movement also. You know? They are not interested in any political matter, any worldly things, what is going on. They are just want to be hearing Krishna Katha. Nothing else. You know? So first when we hear Krishna Katha, this is called Shravan Dasha. After that, when we got taste, when we accept that Krishna Katha, yes, this is called Varan Dasha. You know? Then what happens? When one attains this stage, he becomes attached to hearing of Krishna Katha. When one is able to chant in ecstasy, he attains the stage of Smaran Avastha, the stage of remembering. So, what happens is, when he is completely absorbed in Krishna, then he naturally likes to speak about Krishna. And that speaking about Krishna, then what happens is, that stage is called Smaran Avastha. That's the Avastha of Smaran. Means he's constantly thinking and speaking, constantly thinking and speaking. No other things is there. In that, what happens? Here it is mentioned. Recollection, absorption,
meditation, constant remembrance, and trance are five items of progressive Krishna Smaran. This is very important. Recollection. So that means Smaran. Means what? When he has heard so much Krishna Katha, naturally he recollects. Then when he recollects, he becomes absorbed in that. What that absorb means, he feels himself to be the part of that fasting. And then he again meditate upon that fasting, or how that Krishna is playing, how that thing is happening. He's again and again meditating. Then constant remembrance. Now he cannot bring back his mind from that. You know, constant remembrance means that throughout the time he is now remembering that past time. And sometime when he has to do some other task, he forgets about that. Like we know that Chaitanya Mahaprabhu, how when he goes into ecstasy, he used to forget. Chaitanya Mahaprabhu was showing these two avasthas. Chaitanya Mahaprabhu, he was showing this avastha of internal mood. He used to sometime in Vrindavan, like when Chaitanya Mahaprabhu once on this day of Ras Lila, Purnima Ras Lila, Sharad Purnima day, he saw the moon and he saw those sand dunes, Chataka Parvat. He saw them to be Govardhan. He saw ocean to be Yamuna, and just went into ecstasy, went into the Yamuna. And there one fisherman caught him, and Chaitanya Mahaprabhu's hands were loose, and he was like completely unconscious. That fisherman brought him, of course, Nityanand Prabhu, Sarup Damodar, they all went and rescued Chaitanya Mahaprabhu. And when they rescued Chaitanya Mahaprabhu, they were seeing that Chaitanya Mahaprabhu is a Chetan, not doing anything. That time, Nityanand Prabhu, Sarup Damodar, they chants the holy name to bring back Chaitanya Mahaprabhu. And then Chaitanya Mahaprabhu, he comes back. Earlier he's in internal consciousness. Now he comes back to semi-external consciousness. And you know what he says? What all of you did? Who brought me here? I was there in Vrindavan. I was plucking flowers to assist gopis in decorating Krishna. Why you have brought me? Where is that? Like that, Chaitanya Mahaprabhu starts saying, and all the devotees think, what happened? And then after some time, Chaitanya Mahaprabhu again comes back to completely external consciousness. So such kind of thing, constant remembrance. Means that devotee always thinks about Krishna, but sometime occasionally, for doing some house some bodily needs fulfillment, of clearing one's body and something, he may forget about Krishna or stop remembering about Krishna. Otherwise, he's constantly remembering Krishna. And then there is come trance. Trance to means that nothing is he is able to bring back. Every situation he is Krishna conscious, fully Krishna conscious. Like what Prabhupada is telling this, we'll say, try to see. At first, remembrance of Krishna may be interrupted at intervals, but later remembrance proceed uninterruptedly. When remembrance is uninterrupted, it becomes concentrated and is called meditation. When meditation expands and becomes constant, it is called anusmriti. Anusmriti means, which we saw over, constant remembrance. By uninterrupted and unceasing anusmriti, one enters the state of samadhi, that means trance. So this anusmriti here means constant remembrance. And this trance here means samadhi or spiritual trance. After smaran dasha or samadhi has fully developed, the soul comes to understand his original constitutional position. At that time, he can perfectly and clearly understand his eternal relationship with Krishna. This is called Sampatti Dasha, the perfection of life. So this is how one starts practicing Raganuga Bhakti. कैसे करता है? श्रवण करता है, फिर वरण करता है, फिर जब वो वरण बहुत अच्छे से ग्रो करता है तो स्मरण में आता है. स्मरण में 5 अवस्थाएं हैं. पहली, जैसा प्रभुपाद ने बताया, रिकलेक्शन है. दूसरी अब्जॉर्प्शन है. फिर तीसरी कांस्टेंट मेडिटेशन है. चौथी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है. और पांचवी ट्रांस है. ट्रांस में उसको पता चलता है कि मेरा रिलेशनशिप क्या है कृष्ण के साथ. एंड स्पेसिफिकली ही कम्स टू नो व्हाट इज हिज स्वरूपा इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. अभी बस पता चला है उसको, सिर्फ पता चला है. वो अभी ऐसा नहीं हो गया कि मैं कृष्ण का स्वरूप, नहीं, इट जस्ट ही केम टू नो अबाउट दिस. नाउ ही एक्चुअली प्रैक्टिस, हैज टू प्रैक्टिस दैट, है ना.
and that practice is called Raganuga Bhakti again. And so this complete process is Raganuga Bhakti. So अभी उसको पता चल गया, अब क्या करना है उसको आगे बताया गया. Chaitanya Charitamrita advises those who are neophytes to give up all kinds of motivated desire and simply engage in the regulated devotional service of the Lord according to directions of scriptures. In this way, a neophyte can gradually develop attachment for Krishna's name, fame, qualities, and so forth. When one has developed such attachment, he can spontaneously serve the lotus feet of Krishna even without following the regulated principle. This stage is called Raga Bhakti, या Raganuga Bhakti, or devotional service in spontaneous love. Now what happens is, when one has developed this stage, जो हमने अभी बात किया, constant meditation in trance, now he wants to serve Krishna not because of scriptures, because he has developed raga for Krishna, attachment for Krishna. Now what will happen, very important thing to understand here is, this devotee, his life will be completely depend upon loving Krishna. He is not practicing the limbs of devotion service or principles of devotion service because it is given in the scriptures. He is practicing because he is liking that. And therefore, sometime such person may give up some principle of regulative devotional service, Vaidhi Sadhana Bhakti, because he may feel that that principle is not conducive for him to develop his particular raga with which he has relationship with Krishna. ठीक है. So of course higher चीजें, but let us try to just see, है ना. And then what happened, when he has actually developed that raga, he want to cultivate it more. Then that is what happens here. At that stage, the devotee can follow in the footsteps of one of the eternal associates of Krishna and Vrindavan. This is called Raganuga Bhakti. Raganuga or spontaneous devotion service can be executed in Shantrasa. Raganuga Bhakti is required for all the rasas to enter into Vrindavan, whether it is Shant, Dasya, Sakhya, Vatsalya or Madhurya. Don't think we will just attend Shant Rasa like that. No. It has to be followed. Now Prabhupada says whom he will, Bhaktisiddhanta Thakur also mentioned, whom he will meditate upon, and which associate he will follow of Vrindavan. So now he is telling one by one in which rasa which associate to be followed. Can be executed in Shant Rasa when one aspired to be like Krishna's cows, stick, flute in the hand of Krishna, or flower around the neck of Krishna. So in Shant Rasa, one will be meditating upon all these beings, Krishna's cow, stick, flute, flower, all these things. We see even the trees also have this Shant Rasa. So all these things he will be aspiring to do. Now, if somebody is aspiring for Dasya Rasa, what happens? In Dasya Rasa, one follows in the footsteps of servants like Chitraka, Patraka, Raktaka, and all other servants, those who are there. And he will hear those pastimes from the scriptures. He will be specially absorbed and understanding the mood of this kind of Dasya Rasas devotees. Like I tell you, one of the Dasya Rasa pastime, which Rup Goswami gives example, he quotes in Nectar of Devotion. He says that there is a book written by Jiv Goswami, which is called Gopal Champu. So what is there in the book Gopal Champu? In Gopal Champu, Jiv Goswami writes that in Golok Vrindavan, that higher planet above, there they also discuss sometimes about the Krishna's pastime, what he did in Bhaume Vrindavan. What Krishna did pastime in Bhaume Vrindavan, they discuss in Golok Vrindavan. And who narrates those pastimes? So there are these two beautiful birds. One is called Madhukanda, another is called Snignakanta. So these two birds, they narrate the pastime to Vrajvasis. And Vrajvasis hear Krishna's pastime, what happened in Bhaume Vrindavan. And then what happened, once there was a day, what happened, the Snigdakanta and Madhukanda, they were narrating the pastime of Damodar Leela, how Damodar Leela happened in the Bhaume Vrindavan. And they finished the pastime that how those two Yamala Arjuna trees, sons of Kuvera, they were liberated. And then they ended the pastime. So Nand Maharaj got up and he said, Are Snigdakanta, Madhukanda, I want to know what happened to those two trees, those two Nal Kuver and Manigriv, what happened to them, after they got liberated, where they went.
So Snigdakanta, Madhukanta, they were quiet. They were not speaking anything. Nand Maharaj urged, I want to know what happened to them. Please tell me. Snigdakanta, Madhukanta, they started crying. Nand Maharaj said, please tell me, are they all right? And Snigdakanta, Madhukanta, in crying voice, they said, Nand Baba, how we can tell you the fortune of those two, Nal Kuber and Manigriv. Those two personalities are we two. By Krishna's grace, we became Snigdakanta and Madhukanta in the spiritual world, Golok Vrindavan, and narrating to you all the pastimes of Krishna because we happened to see all the pastimes of Krishna there in Golok Vrindavan. So this pastime, you know, when that devotee hears, he gets that feeling, my God, this is Dasya Bhav, and I just want to serve Krishna. That is how Raganuga Bhakti, he Bhakta hears. In friendly, he hears Sakyaras. One can become friend like Baldev, Sridhama, Sudama. There are also so many pastimes, Sakya pastimes there. And in Vatsalya Rasa, characterized by parental affection, one can become like Nanda Maharaj and Yashoda. And in the Madhurya Rasa, characterized by conjugal love, one can become like Srimati Radharani or a lady friend such as Lalita and her serving maids, Manjaris like Roop and Rati. This is the essence of all the instructions in the matter of devotional service. So, such kind of personality is a very fortunate one, who has actually attained this Raganuga Bhakti. And there are more, what we say, the description of Raganuga Bhakti, which are found in Chaitanya Charitamrita and various places. But because of our scope of this nectar of instruction, we are keeping it limited. There are many things to be discussed, many examples can be discussed, but most important thing is we need to have this greed. So one thing I forgot to mention is that who can enter into this Raganuga Bhakti. So Rup Goswami says tatra lolyame kapi mulyam. One who develops greed to practice this Raganuga Bhakti. So after hearing such kind of pastimes, after reading books like Nectar of Instruction, when one feels that greed, I want to actually, practice Raganuga Bhakti, that person becomes qualified to practice Raganuga Bhakti. That means he should hear giving up material motives, he should hear constantly, and he should chant also, and he should remember in that 5 stages, and then once his spiritual identity is revealed, he follow in the footsteps of that Vrajvasi. So this is how one progresses in Raganuga Sadhana Bhakti. Sometimes this misnotion is there that, oh, I am not purified, qualified, and people have fear that I may not practice, I should not practice Raganuga Sadhana Bhakti. Yes, if one is feeling like that, he is not qualified because the only qualification for practicing Raganuga Sadhana Bhakti is greed, according to Rup Goswami. Yes, now when one practices, wants to practice, he has to do Shravan. And when he can do constant Shravan, when he gives us material motives, that means if we correlate it with those stages, so to certain degree, our anartha should go. It's not that complete anarthas will go. No, no, no. That is perfected being, and that is prema. Complete prema will come, complete anarthas will go. That's what Madhurya Kadamni says. But to little bit degree, our anartha should not be disturbing us. One should not be finding pleasure into this material world. And one should at least know theoretically that these all things are not going to give me happiness. What I am hankering for, this money, this prestige, and this sex life, and all those things are not going to give me happiness, and therefore I don't want to aspire for that. I want to aspire for this kind of bhakti, Raganuga Sadhana Bhakti. And then he will hear constantly, and then slowly he will chant, and as he will progress under the guidance of a devotee, he may progress, but that is the requirement for Raganuga Sadhana Bhakti. Complete alienation of anarthas is not the requirement. According to Rup Goswami, the requirement is greed. I want to live in that praja. And for that, I am ready to do anything. Like people in this world have na targets. I want to crack this exam. I'll do anything. They stop eating. They stop sleeping. They stop going around. They stop celebrating festival. They stop chanting also sometimes. They stop hearing, reading. They stop Bhakti Shastri class. They stop camera. Anything they are ready to do. Why? Because they want to crack exam.
And even to such a degree, they stop association of devotees also. So that kind of greed we need to have here for Krishna. We'll also stop everything. We will stop material sense gratification. We'll stop aspiration for some big thing in this material world. We'll stop setting right this material world. That is not the priority for that Ragunuga sadhana bhakta. He doesn't think कि मेरे घर वाले अच्छे हो जाए, मेरा मेरा प्रेस्टीज बढ़ जाए, मैं ये मेटल वर्ल्ड को अच्छा कर दूंगा, मैं ये कर, वो कुछ नहीं सोचता है। उसका एक ही ग्रीड रहता है, मेरे को बस ऐसा बनना है। आई वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली हियर रिमेंबर दिस ग्रीड इज द क्वालिफिकेशन। एंड इफ समबडी डेवलप्स दिस ग्रीड, how he develop, when he will hear the such kind of narrations from our acharyas, then he will develop this greed. There is no other mechanical method to develop this greed, no। है ना? अगर कोई सोचे प्रभु जी मैं बस श्रवण कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, हो जाएगा सब कुछ, अपने अपने आप नहीं होने वाला है। आपको इच्छा करनी पड़ेगी, थोड़ी इच्छा करेंगे, कृष्णा ये या था हम प्रपद्यंते करेंगे, है ना, देन वी विल बी एबल टू गिव अप। एंड देयरफॉर सच रागानुगा साधना भक्तास are very rare, but they are the one who Chaitanya Mahaprabhu want all devotees to become like. So we'll stop here. Thank you very, very much, Prabhuji. Next week, probably in Monday and Tuesday, we'll try to cover the last three shlokas. They are also such a highly elevated shlokas, so we will just hear the theory and don't ask me practical questions. Thank you. Hare Krishna. Any questions? Yes, Prabhu. हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। प्रभु जी एक क्वेश्चन आया था प्रभु जी, जैसे हमने जो पढ़ा उससे मुझे ये समझ में आया प्रभु जी कि रागानुगा साधना भक्ति का जो एंड है वो स्वरूप सिद्धि है प्रभु जी। ये सही समझ में आ गया प्रभु जी मुझे? Perfect. और उसके बाद रागानुगा भक्ति स्टार्ट होगा प्रभु जी, ऐसा? एक्चुअली पूरा प्रोसेस ही रागानुगा है, बट उसके बाद आप वो एक्चुअली में फुटस्टेप्स को फॉलो करना शुरू करेंगे। यस। ओके। तो प्रभु जी इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था, क्योंकि जैसे हम जो 8 स्टेप सुनते हैं प्रभु जी, वो आदव श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, तो उसमें बताते हैं कि निष्ठा तक जैसे कि स्वैधि साधना भक्ति है, फिर वहां से लेके आसक्ति रुचि, रुचि आसक्ति, वो वाला रागानुगा साधना भक्ति है, और फिर भाव जो भाव भक्ति है, और प्रेम प्रेम भक्ति है, ऐसा करके बोलते हैं। तो इसमें राग साधना भक्ति का प्लेस कौन सा है प्रभु जी, जैसा? हाँ, तो वही मैंने आपको बताया ना। देखिए क्या है, अभी ये ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, आज खत्म, चलो आज अनर्थ अनर्थ खत्म, अब निष्ठा हुआ, ऐसे नहीं है। इट्स लाइक ग्रेजुअल प्रोसेस इट हैपेंस, है ना। सो जैसे जैसे आप अगर श्रवण कर रहे हैं एंड योर ग्रीड इंक्रीजेस टू दैट डिग्री, और अनर्थास विल गो अवे। सो फ्रॉम देयर ओनली इट्स ओवरलैपिंग, इट स्टार्ट्स, रागानुगा साधना भक्ति आल्सो स्टार्ट्स। एंड व्हेन वन इज एबल टू फुल्ली प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसा है ना, जैसे हम एग्जाम्स कर रहे हैं, तो एग्जाम्स के मतलब जैसे कॉलेज में है कोई, तो उसका क्या, कॉलेज चलता है तो वो भक्ति करता है कि नहीं, मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन दिन में उसको बेचारे को कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन निष्ठा की स्टेज कैसी है, निष्ठा मतलब अभी कॉलेज की छुट्टी पड़ गई है ना, अब वो चला गया कैंप में। अब उसको क्या करना है, पूरा टाइम है उसके पास भक्ति करने के लिए, तो वो है निष्ठा। निष्ठा में रागानुगा भक्ति जो है वो कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छे से कर पाएगा। जो ये ट्रांस हम बातें करें, मेडिटेशन, कॉन्स्टेंट मेमोरी, सब कर पाएगा। लेकिन बाकी स्टेजेस में करेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, करेगा फिर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इस स्टेजेस में ग्रो करने के लिए क्वालिफिकेशन एक चाहिए, वो क्या है? ग्रीड प्रभु जी। हाँ, अनर्थ निवृत्ति नहीं है। हम्म। ऐसा मत सोचो कि निष्ठा पे पहुंचूंगा तब रागानुगा साधना भक्ति करूंगा, नहीं नहीं नहीं। ग्रीड है तो करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज वी विल सी दैट अल्टीमेटली इट्स कृष्ण प्रेम विच इज गोइंग टू हेल्प अस टू गिव अप ऑल दोस अनर्थस, है ना। तो कृष्ण प्रेम के लिए तो ये रागानुगा साधना भक्ति कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। थैंक यू। यस प्रभु। Thank you, प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप ये जो बता रहे थे ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जो भाव भक्ति या फिर रागम भक्ति, उसमें डिफरेंस क्या है प्रभु जी? भाव पे तो अभी तक हम आए नहीं, रागानुगा की बात कर रहे हैं अभी, भाव पे नहीं आए हम लोग अभी तक। हाँ प्रभु जी, मैं तो just थोड़ा सा वैसे साइड में पूछा, मतलब क्योंकि हम लोग बार काफी बार सुनते भी हैं जब कैंप में। भाव के बारे में हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे, अभी रागानुगा के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। ये जो आपने थर्ड पॉइंट बताया था कि स्मरण अवस्था में, इसमें जो 5 स्टेजेस बताई, इसमें थोड़ा डिफरेंस क्लैरिफाई कर सकते हैं क्या आप 5 में? मतलब सब में नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ कुछ में डिफरेंस है। जैसे इसमें आया था कि रिमेम्बरेंस में और मेडिटेशन है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस और मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क है? एब्जॉर्प्शन और कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में क्या फर्क है? ऐसा जो 5 उसमें लिखा था आपने।
ओके, तो रिमेम्बरेंस में क्या है कि उसने जो सुना है उसको याद कर पा रहा है वो, ठीक है, रिमेम्बरेंस है। फिर मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ये है कि खाली एक बार याद नहीं कर रहा है, वो थोड़ा लंबे समय तक उसके ऊपर ध्यान लगा पा रहा है, क्या चल रहा है, उसको ध्यान बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेंट मेडिटेशन, उसको बोलते हैं धारणा। हम्म, धारणा इन द सेंस कि पहले तो वो क्या कर रहा था, पहले तो खाली वो ध्यान लगाता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब अब उसके सॉरी, पहले तो रिमेम्बरेंस था, उसको रिकलेक्शन बोलते हैं, दूसरा उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, कि अब वो मोर देन वन टाइम भी उसको रिकॉल कर पा रहा है एंड ही इज एबल टू थिंक अबाउट इट। देन कम मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब अब वो उसको कॉन्स्टेंटली उसको याद कर पा रहा है, हमेशा उसको याद रख के चल रहा है, ठीक है। जब भी कोई चीज भी कर रहा है, ही इज रिमेम्बरिंग दैट थिंग, है ना। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि प्रभु आज फीस्ट में गाजर हलवा है, तो आप क्या कोई भी काम करते हुए, मतलब मैं एटलीस्ट, आप नहीं, आप एलिवेटेड है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं हर एक चीज करते हुए गाजर हलवा याद रहेगा, मेरे माइंड माइंड के बीच में चलता रहेगा, वो मेडिटेशन का स्टेज है। लेकिन उससे ऊपर स्टेज है कांस्टेंट, जो रिमेम्बरेंस है, उसमें क्या होगा, ही विल नॉट डू एनीथिंग, ही विल बी जस्ट थिंकिंग अबाउट कृष्णा। है, जैसे वो हम बोलते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु जब अपने शिष्यों को पढ़ाते थे ग्रामर, जब वो आगे थे वहां से गया से, तो ही वो जस्ट स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। तो मैं किसी से भी बात करूंगा तो मैं उस गाजर हलवा, है ना, तो कुछ भी बोलूंगा गाजर हलवा, हाँ प्रभु गाजर हलवा, तो वो फिर गाजर गाजर हलवा ही चल रहा है ना। थोड़ा बहुत बीच में रुकना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पानी वानी मांग लूंगा, लेकिन कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस उसका। और ट्रांस में तो पानी भी नहीं मांगूंगा, आई जस्ट थिंक अबाउट कृष्णा, नो मटेरियल थॉट्स एंड डिजायर्स, ठीक है। थ्योरी समझिए, इसको प्रैक्टिकल के लिए तो भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेशन जो करेंगे वैसा होगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन और था, मतलब लेकिन आपने अभी जो हम दूसरों को फिर वापस आपके पास आते हैं, ठीक है, आप हैंड डाउन करके वापस हैंड अप करिए, ठीक है। यस आशीष प्रो। Uh, Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, like as you told that as it is written here that we need to cultivate our bhakti. So, Prabhuji, I am finding it difficult to reconcile this statement with another statement of Prabhupada, which he says that devotional service is so pure and perfect that once begun, one is forcibly dragged to ultimate success. So, I am finding it difficult to understand this in a proper context. क्या डिफिकल्टी है इसमें? Like Proji, it seems by the statement that this is so pure that one is forcibly dragged to ultimate success. तो इसमें ऐसा conception आ रहा है कि like the ऑटोमेटिक, things can yes Proji and वो हमको पता है कि वो ऐसा होता नहीं है. ठीक है ना। सी डिवोशनल सर्विस इज फोर्स अस टू अल्टीमेट सक्सेस, बट डिवोशनल सर्विस डजंट मीन ऑटोमेटिक, इट मीन्स कल्टीवेशन। वही हम सीख रहे हैं यहाँ पे, जो हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, कैसे अंडर द गाइडेंस कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। once you do that parts perfectly, then you will be forced to success। समझ में आ रहा है प्रभु? गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल मास्टर इज अ पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, वी कैनॉट स्किप दैट। समझ आया? Means Proji like एक इसमें ऐसा precondition है कि अगर हम follow करेंगे then only that will lead to ultimate success. Otherwise, करेक्ट। जैसे आप देखें ना, okay. कोई रेसिपी आपको बनाना है, आपको खिचड़ी बनानी है, तो आपको कुक बताएगा प्रभु ये सारी चीजें डाल दो, अपने आप हो जाएगा, है ना। लेकिन वो चीजें डालनी तो पड़ेगी ना आपको, डालोगे नहीं तो कैसे खिचड़ी बनेगी? तो इन इसमें ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, कि ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि आपने अभी तक वो स्टेज आपको पता नहीं है कैसी लगती है। हम्म? वो जो स्टेज है वो कृष्ण प्रेम वाली, वो आपको पता नहीं स्टेज कैसी है, भाव वाली स्टेज, ठीक है। तो वो स्टेज आप सही जगह पहुंच जाओगे, दैट इज परफेक्ट, दैट इज श्योर, बट प्रोसेस ये फॉलो करना पड़ेगा आपको। Yes Proji. Now it seems little bit Proji. थैंक यू। यस नेक्स्ट प्रो, संदीप प्रो। हरे कृष्ण प्रभु। मुझे आपने बताया कि अगर कोई वैदिक साधना भक्ति करता है तो वो वैकुंठ तक हो जा सकता है, पर अगर कोई वैदिक साधना भक्ति कर रहा है पर वो एस्पायर कर रहा है गोलोक वृंदावन, तो क्या प्रभु जी उसके लिए वो नेक्स्ट लाइफ उसको मिलेगा वो प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ करेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस वैदिक से उसको रागनों का साधना भक्ति में जाना पड़ेगा, चाहे वो नेक्स्ट लाइफ में जाए तो उसके नेक्स्ट लाइफ में जाए, कभी तो जाना पड़ेगा।
ठीक है, आप म्यूट हैं। वो वैकुंठ नहीं जाएगा एट द एंड ऑफ लाइफ, वो नेक्स्ट लाइफ प्रैक्टिस। हाँ, अगर वो एस्पायर कर रहा है प्रजा के लिए तो। यस प्रभु, वापस। तो जी वो आपने इसमें बीच में एक बार प्रश्न दिया कि कैसे हमें जो ब्रजवासी हैं उनका एसोसिएशन लेना है, तो फिर क्या है, वो एक ऐसी जगह पे हमें जाना पड़ेगा जहाँ पे भगवान की लीला यहाँ भगवान वृंदावन में चल रही है, तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है, ऐसा आप ये बता रहे थे हम्म। कि। लेकिन प्रभु जी हम लोग तो थोड़ा सा दो तरीके के ओपिनियन सुनते हैं। एक जो आप बता रहे थे रुकने के सूर्य आए थे तो मंदिर में, वो भी यही वाला बोल रहे थे, दो बार ऐसा बोले थे। लेकिन जब एक बार हाँ हिजूल ने भक्ति विलास भागवत स्वामी महाराज जी आए थे तो वो तो बोल रहे थे कि ऐसा जरूरी नहीं है। वो मतलब याद नहीं क्या कोट कर रहे थे, लेकिन जब आए तो लगभग 4 दिन के लिए आए थे, तो उन्होंने तो कोट किया था कि कैसे इस लाइफ में। तो उसमें उसमें देखिए क्या है, जैसे वेदी से भी कृष्ण प्रेम मिलता है और रागानुगा से भी कृष्ण प्रेम मिलता है, करेक्ट। तो वैसे ही अभी क्या होता है, जब हम कोई रागानुगा साधना भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें देर आर सम इंसिडेंसेस वेयर कृपा कम्स ऑफ कृष्णा। देखिए ये जो प्रोसेस है ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसेस बिकॉज कृष्ण के पास जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस लव है, तो इसको रूल नहीं बना सकते, है ना। सो स्टिल देर इज एन एलिमेंट ऑफ कृष्ण की मर्जी अगर हुई, कृष्ण किसी को कृपा देना चाहे तो डायरेक्टली भी उसको अपने पास बुला सकते हैं, बट दैट अप टू कृष्ण, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कृपा, दैट इज ऑल्सो देयर। बट आप बताइए, आप अनसर्टेन वाली चीज पर निर्भर रहेंगे या सर्टेन वाली चीज पर निर्भर रहेंगे, बताइए। अरे हाँ आपसे मतलब हमको तो यही बोला जाता है कि कृपा पे ही निर्भर रहना है, हमारे हाँ पास तो कोई ज्यादा नहीं है। हमको तो ये बोलते हैं हाँ ना कि कृपा पे ही निर्भर रहना चाहिए, ज्यादा हमारे पास नहीं है। हाँ, तो मेरे प्रभु जी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे आचार्य ऐसे नहीं बोलते हैं। सी, अलग अलग स्टेजेस पे ना अलग अलग चीजें बताई जाती है, तो उसके लिए वो क्वालिफिकेशन हमको पता होता है, पता होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई डिवोटी एंट्रेंस कर रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक राउंड चैंटिंग करो। अभी आप कितने राउंड चैंटिंग करते हैं? 18 करता हूँ। तो पहले आप एक करते थे तो एक ही क्यों नहीं करते? उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे एक बोला गया। करेक्ट। तो वो इस टाइम के लिए आपको बोला गया था कि आप बोलो हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन एक्चुअली में इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था ना, आई थिंक यहीं पे डिस्कस किया था। इसलिए हमारे आचार्य सिखा रहे हैं हमको, है ना। पहले हम संप्रातात्मिका, तो हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे अनर्थास को ओवरकम करने के लिए, इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं आप प्लीज हेल्प करो, ठीक है। बट आफ्टर दैट व्हेन वी वांट टू सर्व द लॉर्ड, वो तो लॉर्ड को हमको बोलना पड़ेगा भगवान हम आपको ऐसा सर्व करना चाहते हैं, इसलिए लालसा मई है प्रार्थनाएं, है ना। उसमें वो एक्सप्रेस करता है हाउ आई वांट टू सर्व यू, है ना। तो यस, आपके अनर्थास को ओवरकम करने में भगवान ने बोला है मम माया दुरत्य मामे वे प्रपन्नते माया में तरंते। लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि मेरी सेवा करने के लिए मेरी मर्जी मैं तुमको दे दूंगा तुम ऐसे करें, नहीं नहीं नहीं, हमको अपना डिजायर एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू ब्रो। से लास्ट वाला स्टेटमेंट क्लेरिफाई कर सकते क्या, जो लेक्चर के जस्ट एंड में दिया था कि कोई मैकेनिकल मेथड इसके लिए काम नहीं करेगा अगर डिजायर कल्टीवेट करनी है तो। हाँ, तो कैसे होगा गुरु जी, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई, मतलब उससे आपका मतलब क्या था गुरु जी? आप बोले कोई मैकेनिकल मेथड से ऐसा नहीं हो सकता कि वो डिजायर कल्टीवेट हो जाएगी। मैकेनिकल मेथड मतलब कि जो हम ये लोग हियरिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग सिर्फ एक लेक्चर चला दिया जैसे आजकल होता है दुनिया में, हम जैसे एक भक्त से बात कर रहे थे तो उसने क्या कर दिया है, बिकॉज अभी काउंसलर को बताना है, भाई हर दिन 1 घंटा सुन रहे हैं तो हमने क्या 1 घंटा सुन लिया, क्यों काउंसलर को बताना है, समझ आ रहा है। वैसे चैंटिंग करनी है क्यों, अभी क्या है वो लिया है 16 माला करना है तो करना, भाई क्या कर, हरे कृष्ण कर लिया। ऐसा मैकेनिकल मेथड से नहीं होगा। वी हैव टू कॉन्शियसली हियर, वी हैव टू कॉन्शियसली चैंट, वी हैव टू कॉन्शियसली एसोसिएट विद डिवोटीज। ये सब कॉन्शियसली करना पड़ेगा कि मेरे लिए नीड है ना। अभी जैसे आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसा देखने को मिलता है कि डिवोटीज को लगता है कि हम बिना एसोसिएशन के सब कुछ कर लेते हैं, स्पेशली वर्किंग डिवोटीज को लगता है। लेकिन बिना एसोसिएशन के आप नहीं कर पाएंगे। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परसतम कथयंत क्षमामृतम तुष्यंति चरम, आप रमन कर ही नहीं पाएंगे कृष्ण कथा में, तब दर्शन नहीं है।
लेकिन उनको लगता है हम बस घर बैठे आराम से चैंटिंग कर रहे हैं 16 माला, और फिर ये क्या कहते हैं, रीडिंग हेयरिंग कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया नहीं चल रहा है, उससे राग नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है उससे कुछ राग आ रहा है, तो वो मैकेनिकल प्रोसेस का आप फोर्सफुली सोच रहे हो कि वो राग है, वो फोर्सफुली नहीं आएगा। ऐसे ही सहजियास करते हैं ना। सहजियास क्या करते हैं, दे गिव अप रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, है ना। वो श्रवण कहाँ करते हैं भक्तों के संग में, वो राधे कृष्णा गोपी बन जाते हैं ये सब। तो ये सब आर्टिफिशियल है, मैकेनिकल मेथड, आप प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे। प्रोसेस श्रवण है, कीर्तन है, भक्तों के साथ में करते हुए जब आप जाएंगे, वैष्णव अपराध अवॉइड करते हुए, तब जाके वो प्रोसेस है ना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक हरे यू सो मच। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु प्रभु जी आपने, ओके जल्दी बोलिए, लास्ट फटाफट बोलिए। जी, आपने आपने जो बताया कि लिविंग इन वृंदावन तीन तरीके का, एक माइंड के द्वारा, और एक फिजिकली प्रेजेंट, और फुट स्टेप तीसरा जो है आचार्यों के जो फुट स्टेप है उसको फॉलो कर। ना तो ना, प्रभु दो जी, है वृंदावन, बस एक है अपने माइंड में भाव वृंदावन, और एक फिजिकल। हाँ प्रभु जी, अगर कोई फिजिकल प्रेजेंट है वृंदावन में, और वो कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर नहीं कर रहा है कृष्ण को, और कोई वृंदावन में नहीं है और वो कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर कर पा रहा है कृष्ण, प्रभु जी उसमें कौन सुपीरियर होगा उसमें? फिर आपने बता दिया, जो वृंदावन में नहीं है लेकिन कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर कर रहे हैं, परफेक्ट वही है। तो वृंदावन में रिसाइड करने का मेन गोल है कि हम कृष्ण को रिमेम्बर कर रहे हैं, कृष्ण के वृंदावन पास टाइम। वृंदावन में रिसाइड करने का गोल ये नहीं है कि हम बस फिजिकल बाउंड्री में हैं। परफेक्ट, समझ गए आप। ओह, थैंक इसलिए हम देखते हैं भक्ति संजय ठाकुर ने अपना वृंदावन बनाया था। हम जाते हैं ना गौड़ी मठ में, वहाँ पे गोवर्धन है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है। गए कि नहीं आप? नहीं प्रभु जी। यस प्रभु जी। गए ना? हे भगवान। ठीक है। तो देखिए, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ जो है मायापुर में, वहां पे उन्होंने गोवर्धन बनाया, राधा कुंड श्याम कुंड बनाया। वैसे ही रूप और सनातन राम किले में रहते थे, वहां पे उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड बनाया। ठीक है। प्रभुपाद जी जब न्यू वृंदावन में गए, तो वेस्ट वर्जीनिया, वहां पे उन्होंने न्यू वृंदावन बनाया, है ना। प्रभुपाद बोले मेरा मंदिर भी वृंदावन है। और उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज ने जीवी में वृंदावन बनाया। और वांग विष्णुपुर में भी श्रीनिवास आचार्य ने वृंदावन बनाया था। और शिवराम स्वामी महाराज ने हंगरी में वृंदावन बनाया। तो ये सब भी वृंदावन है। ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु जी, सो काइंडली प्रे सो दैट वी ऑल कैन गेट दैट ग्रीड टू प्रैक्टिस स्पॉन्टेनियस sadhana bhakti. Hare Krishna. So next week will be little more higher topics of bhava and prema, and we'll try to read and go through it. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.